Muaaz? Yes, sir. I got the book, sir. Am I audible now, Muaaz? Am I Yes, sir. audible properly? Yes. Sir. So, we were doing the reactions of alcohol, I think, right? Yes, sir. We have been, we have been, okay. Right, next, the reaction with hydrogen halide. See here, the reaction with hydrogen halide. So what is hydrogen halide? It is basically HS. And please don't write, just look at what we are doing right now. So we have seen this reaction in the chapter alcohol, chapter haloalkane and halorine already. If you have ROH and you react this with HX, in that case, you're going to get RX. Plus, you will get H2, that's another thing. Fine. Now, HX, what is X? It is actually a halogen. So, H can be either hydrogen chloride or hydrogen bromide or hydrogen fluoride. Let me do it. Form HCl, HBr, and HI. And if I talk about the reactivity, so basically what is happening? OH is being replaced by X. Now, the most fast in these cases will be HI. HI will be the fastest to react. Why? Because HI bond can be easily broken. Iodine is very large, hydrogen is very small, so the bond between them is not very good. And that is why hydrogen iodide
going to be fastest, followed by HBr, followed by HCl. And HF is so slow that it does not really react with any alcohol. Okay. Now this is the reactivity. If I talk about the reactivity of different alkynes, the reactivity of HX, and next we have to see the reactivity of alcohol. Now in alcohol, the 3 degree will be the most, followed by 2 degree, followed by 1 degree. Why? Because as soon as the alcohol bond is broken, the R will be positive charge. Because oxygen is more electronegative, it will pull the electron density and take it away. And R will be what? It will be positive charge. So the carbon atom will be positive charge, and that is why the carbon atom will get a positive charge. Okay. And hence the carbon 3 degree carbon is more stable. That is why this is fastest. Okay. Now, this is one reaction. And now for this reaction, what we have one test that is very important. Lucas test. Now, Muaaz, everything fine? Yes, sir. Sorry, sir. What is Lucas test? Lucas test is basically the reagent here that we're going to use is HCl, the सर HX इससे part, पिछला पार्ट sorry, आप जब इससे पहले जो समझा रहे रिएक्शन विथ yes, रिएक्ट yes. जी सर यहाँ से रिएक्टिविटी ऑफ आर एच So you did not hear that? जी सर So basically, when we have a carbocation, first you'll have COH, this bond is broken, then you will get C positive. Because oxygen is more electronegative, it will take away the electron, right? So when you have carbon positive and a carbocation, in this carbocation, you can have 3 degree, or you can have 2 degree carbocation, or you can have 1 degree carbocation. 3 degree is most stable, followed by 2 degree, and then 1 degree. And since the 3 degree carbocation is more stable, that is why the reactivity of 3 degree alcohols will be fastest. Got it? यस सर Yes or no? Sorry? जी सर Then we have Lucas test. In Lucas, we have to use HCl. And because HCl is also one of the slowest here, that's why it's a catalyst. That is known as HCl in the presence of ZnCl, zinc chloride, right? Now, what does Lucas test do? Please see. If I have 1 degree alcohol,
So 1 degree alcohol will be slower. That is why in the presence of, then I write LR, that is Muaaz reagent, you have to see HCl in the presence of ZCl. Then it forms RCl, which is white PPT. Or you can say that it is forming turbidity. What is turbidity? Basically, अगर आप chalk water ले, you take chalk water, and then you mix it in water. So that solution will become something like whitish type of solution बनेगा. So that is known as turbidity. So whenever you have a white precipitate and there is dissolved in the solution, generally इसको turbidity बोला जाता है. ठीक है? So you will get turbidity on heating, not at room temperature. Okay? Because 1 degree alcohol, it is also very slow to react, and the HCl is also very slow to react. That is why you will get turbidity only after heating. If you don't get, you will not. Then we have the 2 degree alcohol. In the presence of Muaaz reagent, it is going to give you seeing the RCl thing. That is the same white PPT or turbidity after 5 to 10 minutes. Now, the 2 degree alcohol only needs time. 3 degree alcohol, in the presence of Muaaz reagent, it is going to give RCl and the same thing, white PPT or turbidity immediately. Make sense? इस वाले पिक्चर की याद रहेगा ये? जी सर. So this is one reaction that we have seen. Next we are going to see result. This one is again an important one, acidic reactant. What's going to happen here? You're going to have carbon atoms like this. Here you're going to have hydrogen. Here you're going to have OH2. So we have an alcohol, and this carbon atom is known as the alpha carbon. Okay? The carbon atom which directly holds the OH, that is known as alpha carbon. Just adjacent to it, the carbon that is directly connected with the alpha carbon, that is known as beta carbon. Now, when you are going to add acid in the presence of heat, then you are going to get carbon. The 2 groups will be as it is, a double bond, and this carbon, the 2 groups will be as it is. So basically, H2O is being removed. 2 hydrogen, 1 oxygen. Can you see that? Yes sir. Water being removed, so Yes. you will get plus H2O. Now, this is what's happening, but how are we going to write the reactions and everything? So, for example, if I have, तो यहाँ पे एक चीज अगर हम आपको बताएं, अगर आपको याद हो, do you remember the set-zip rule? Yes, do you remember the set-zip rule? जी सर, आप पढ़ाए थे. Sorry, जी सर, याद है. it is going to, हाँ, तो इसको ना रिवाइज कीजिएगा जरा. It is going to follow the same set-zip, ठीक है? It follows set-zip rule. Now, I will show you anyhow. See what's going to happen. Okay, this. For example, I have an alcohol like this, and in the presence of H2SO4, and some heat, what's going to happen? You have to remove the, first of all, what you will do is identify the alpha carbon, identify the beta carbon, beta 1, this is going to be beta 2. Now, you will calculate the number of hydrogen in beta 1. How many hydrogens in the beta 1? How many hydrogens in beta 1? Muaaz? Sorry? Sir, 3. 3 hydrogens. How many in the beta 2? 2 hydrogen. 2 hydrogens. Very good. So, according to the set-zip rule,
the hydrogen will be removed from that beta carbon which has less number of hydrogen. That means beta 2 से hydrogen निकालेंगे तो beta 2 में double bond. So make everything as it is. Remove the OH, alpha, and the chosen beta. What beta will be chosen? The one which is having less number of hydrogen. उन दोनों के बीच में double bond. Does that make sense? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, when you have something like this, let's suppose you have. Now, here if you see here, both of these are P3 hydrogens. So you don't have to worry. You can write like this, or you can write like this, because both of them are going to have same number of hydrogen atoms. Can you see that? You tell me. Yes, sir. I got it. Okay. First of all, but देखिए आप सारा step कीजिए ना, do this particular question, but you do all these steps, okay? You write the alpha carbon, you then identify how many beta carbons are there, then how many hydrogens are there in the beta. You write it like this. Once you write it like this, then only you will be able to do correctly. You cannot write the product directly. ठीक है मत ध्यान रखेंगे. ले इस चीज को आप उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे. It's very important to identify the alpha carbon, identify the beta carbons, कितने कितने beta है, beta पे hydrogen कितने हैं. Got this, Mas? Yes, sir. कीजिए और हमको भेजिए जरा जल्दी. Try to do it like step wise, okay? Don't hurry to write the answer. Okay? सर इस वाले में दोनों C3 हाइड्रोजन. Yeah. वीडियो आपने अल्फा को आइडेंटिफाई किया होगा, बीटा आइडेंटिफाई नहीं किया सही से. ये हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी करिए.
आपने हाइड्रोजन नहीं लिखा है. You have not written the hydrogens. Mass, write the hydrogens. Write the number of hydrogens. Hmm. Mass, how many hydrogens in the beta 1? How many beta 1. hydrogens here? Tell me. This one, the blue one. blue में कितना जल्दी बताइए? 2. How many? कैसे देखो? 2. उंगली रख के काउंट करो. Number of bonds. उंगली रख के काउंट करो. सर 1 उंगली रख के आपने बॉन्ड. देखिए, आपने कुछ चेंज नहीं किया. आप दिमाग में क्या आपने मतलब कुछ नहीं आया नहीं किया. फिजिकली यू हैड टू काउंट. ठीक है मास. प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए. आपको ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है. आपको अपने उंगलियों का इस्तेमाल करना है. चाहिए 1 2 3. ठीक है, समझ में आ रही है? जी सर. ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 है. एंड हियर वी आर हैविंग हाउ मेनी? 3. सो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 3 पे नहीं 1 पे ना. लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन भाई, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे देखो 3 था, यहाँ पे 2 था. लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे बनेगा. सॉरी, दिस OH will be not be like that. It will be like this. आपने OH शायद बनाया है क्या? OH में बनाया. वेरी गुड. ठीक है, चलिए. अब इसी तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करने होंगे. नेक्स्ट जो आपके पास वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है. हाँ, ऑक्सीडेशन जो है ना, आपके पास 2 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग. यहाँ पे अगर देखिए आप, वही हम पहले लिखा देते हैं. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉल इट माइल्ड या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग. नंबर 1, यू कैन हैव केमेनोफोर. ठीक है, केमेनोफोर जैसे भी आ जाए आपके पास क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव A2Cr2O7 और Na2Cr2O7. Third is HNO3. Fourth is chromic acid. Chromic acid is also known as, also written as HTCrO. Right? Now, in the mild oxidizing agent, आपके पास एक है Collins reagent. Right? तो भैया Collins reagent. Second is PCC. Third is PDC. ठीक है. So here we have 3 reagents. अच्छा, अब देखिए Collins reagent क्या है आपको जानने की जरूरत है. It is CrO3 C5H5N, है ना. तो Collins reagent या तो आप लिखिएगा या तो फिर if this they will give you Collins reagent, right? You don't have to worry what the formula is. Even for PCC or PDC, you don't have to worry what the formula for PCC or the PDC is present. ठीक है मैम? Make sense? People me? Yes sir. तो बेसिकली होगा क्या? अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे, that will be R CH2OH. RCH2OH. If you are going to use a weak oxidizing agent, then it is going to get converted to aldehyde R C double bond O.
If you are going to use a strong oxidizing agent here, then this will get converted to carboxylic acid like this. Now, we can also go directly from alcohol to carboxylic acid using strong oxidizing agent. This is, please remember, 1 degree alcohol. This is aldehyde. This is carboxylic acid. Just give me a second. Now, if I'm going to have a 2 degree alcohol, it will look something like this: R, carbon with 1 hydrogen, and here it is going to have other alkyl group, and then here it is going to have OH. If you use a weak oxidizing agent, you will get a double bond. This is just the one process. What is happening here? The hydrogen is removed. हाँ, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना? सही है? डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड बीच में, बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है? अब साथ साथ में एक और चीज हम लोग लिखते हैं, ठीक है? रिएक्शन विद कॉपर के साथ में सवाल कर लेंगे। एक पॉइंट आप बस ये लिख सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल अभी नहीं लिखेगा, does not oxidize easily to the absence of alpha hydrogen, ठीक है? That means, see, here if you look at the alpha carbon atom, it is having 1 hydrogen. Here also, if you look at the carbon atom in the 2 degree alcohol, it is having 1 alpha hydrogen. That means the alpha carbon is having 1 hydrogen. But if I look at the 3 degree alcohol, it will be something like this. Okay. So if you see here this carbon atom, this is going to have 0 alpha hydrogen. Alpha hydrogen. That is why it does not oxidize easily, because here we have now break carbon carbon. आपका सवाल आ सकता है कि why 3 degree alcohol does not oxidize easily due to absence of alpha hydrogen. That's it. That's the only what you have to. अब आपके पास ना इसी तरह से रिएक्शन है प्राइमरी अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है? 1 डिग्री अल्कोहल में आपके पास मान लीजिए है OH, copper in the presence of 573 Kelvin heat, you will get 3 carbon atom aldehyde. Please remember, this is 3 carbon atom. It looks like it is 4, but it is 3 only. If you have 2 degree alcohol, suppose we have something like this. Now it is 4 carbon atom. Double bond. Then we have 3 degree alcohol. In the presence of copper, 573 Kelvin, we are going to get 1, 2, 3 carbon atoms like this. We are having 3 carbon, 1, 2, 3, but we make 4. 1, 2, 3, and 4, and then you will get an alpha. That's the only difference. थोड़ा सा आपको टाइम देंगे, आप इन चीजों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लीजिए। इसको देख लीजिए पहले, तो कॉपर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री में यू विल गेट एल्डिहाइड, 2 डिग्री में यू विल गेट कीटोन, 3 डिग्री में यू विल गेट एल्कीन. Important thing is number of carbon atoms does not change. Number of carbon atoms does not change.
तो 3 डिग्री पे एल्कीन आ रहा है। हाँ 3 डिग्री में एल्कीन आता है बिकॉज जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है ना, बेसिक से पहले में क्या हो रहा है ना, OH, ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता बिकॉज वी डोंट हैव एनी हाइड्रोजन एटम। सो द OH gets removed from here and one hydrogen is removed from here। तभी आप याद कर लीजिए, इसको एल्कीन वाले बहुत ज्यादा केस नहीं आता है, ठीक है, मैकेनिज्म में आता है। ये ओनली डिफरेंस अगर आप और देखना चाहें तो यहाँ पे जैसे आपके पास इसके साथ H2 मिलता है, you'll get hydrogen from here, here also you'll get H2, here you will get water because OH and H। देखिए आपने, देखिए एक बार आगे बढ़े। जी सर। This is a weak oxidizing agent, you'll get ketone। This is 2 डिग्री अल्कोहल, ketone मिलेगा, जहाँ पे OH वहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए। सेकेंडली फिर भी आप KMnO4, KMnO4 है तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन एंड हियर यू आर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जी then you have CrO3, ठीक है, दिस इज कॉलिन फ्री एजेंट, CrO3 को कॉलिन फ्री एजेंट बोलते हैं। Will get C double bond because this is again 2 degree alcohol, you have something like this, and if you have PDC, weak oxidizing agent, this is 2 degree alcohol, this is 1 degree alcohol, 2 degree will gain number of carbon atoms same रख देते हैं, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड हो बिकॉज इट इज 2 डिग्री, फर्स्ट 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी here। ये मैं ला रहा हूँ आराम से, देखिए बिल्कुल। सर, सेकंड वाले में उसमें तो लिखा है कि कार्बन एटम्स डज नॉट चेंज। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सही है। यहाँ पे भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, क्या ख्याल है। सर, जिसमें OH लगा है, सॉरी, OH जिसपे तीसरे कार्बन OH पे लगा OH लगा ना, अब तीसरे कार्बन पे ना OH लगा है। है। जी अरे ये तो हमने पहले ही बताया है, here you see this is carbon atom, so this is a bond, right, जी जी। it's not a carbon atom, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज पर भी। That's why I have given this example, देखिए एक बार predicted। so they move forward। सर, लास्ट वाले में हाँ बताओ, सर CHO। नंबर ऑफ कार्बन, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, देखिए पहले, देखिए अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड बनेगा, है ना। और देखिए हमने क्या यूज किया, पीसीसी या पीडीसी, पीडीसी से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है।
Next is chemical properties of around the दो reactions हम करेंगे. Then we have electrophilic aromatic substitution. हमने halogen पे कराया था. Chemical properties of नहीं लिखिएगा ना देख लीजिए. Chemical properties. Chemical properties of phenols. Give me a second. First reaction is very nice, in which you have to just give up the thing, and you will get benzene. ठीक है, समझने का कुछ ज्यादा नहीं. This is only one singular reaction that can happen. ठीक है, इसमें कुछ खास zinc ऐड कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे. If you add zinc, then you are going to get benzene. OH निकल जाना है बस. Then you have one more, that is oxidation. ये reaction बहुत rarely आता है, but still एक बार देख के जरूर जाइएगा. You have OH, and in the presence of Na2Cr2O7 and H2SO4, you will get a compound which looks like this. Double bond O and double bond O. So this is basically benzophenone. This benzophenone. Okay. ये दो रिएक्शन है जो कि इंडिविजुअल है काफी. उसके बाद then you have the reactions which are going to be quite important. That is electrophilic aromatic substitution with halogen halogen. Right? और आपकी आवाज तो तो ये आवाज क्या हो रही है? लाउड आ हो रही रही है. है. लाउड आ रही है. जी सर, नहीं कुछ बैकग्राउंड में कुछ आ रहा है आवाज के साथ जब आप बात करें. क्या आ रहा है? शायद माइक एको टाइप सर, माइक क्या है? लेकिन माइक की आवाज है. माइक अभी ठीक है. अभी ठीक है. जी सर. और अभी how about now? Amas, how about now? आपका माइक ठीक है सर. ठीक है सर. ठीक है अभी. जी सर. इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution सबसे पहले brominic को. We will see two types of brominic. We have first for plus Br2 in the presence of non-polar solvent. Okay. Or not made the OH. Non-polar solvent. And this non-polar solvent can be either carbon disulfide or CCl4. Right? Then you are going to get two products. Which here we are in the on, which here we are in the para. But if I use any polar solvent, same reagent, I'm only going to change the solvent, that is H2. Or any non-polar solvent, non-polar
this, which as it is, we are here, here, and here. Now, what happens when we add H2O? And H2O में क्या नया हो जाता है? So basically, in H2O, what happens? In presence of H2O, phenol कैसे लिख सकते हैं? PH2H changes to PHO negative. Why? Because we have seen that phenol can act as a base, or phenol can act as an acid. अगर आप acid को डालेंगे पानी में, तो it will liberate H plus ion. H plus जब छोड़ेगा, which is stronger plus M group, which activates, which increases electron density in benzene ring. And gives tri-substituted product. Gives tri-substituted तीन दिया, एक दिया लग रहा था, अभी कितना दिया लग रहा है? तीन दिया लग रहा है. What is the reason? Because water add करने पे, now initially यहाँ पे ना lone pair electron, these are the electrons that is increasing the electron density. That is why it is plus and plus. But when you get negative charge, so obviously negative charge is going to be even more pushing the electron density and increasing the electron density in the benzene. ठीक है? Next आपके पास reaction that is nitration. Nitration में भी आपके पास दो reaction. In nitration also we are having two reactions. Basically, we have, ये देखिए ऊपर जो सवाल मैंने लिखा है, that can be asked in Y type of question. ठीक है? Why phenol gives tri-substituted product in the presence of water? ठीक है, तो उसका आंसर देखेंगे because converts to phenoxide ion. है ना? Phenoxide ion, that is very important. You have to write phenoxide ion, या फिर you have to show PHO negative. Now, phenol can show two types of reactions when we do nitration. In the presence of concentrated HNO3 and in the presence of dilute agent. Concentrated HNO3 के presence में it is going to give you only one product, which is going to be which here, and in the three positions, the ortho, para, and this ortho, you are going to get one nitro. So this is basically known as picric acid. Picric acid is the common name. If you want to write the full name, it's going to be 2,4,6 tri-substituted phenol. By the way, आपकी inorganic की क्लास में? जी सर. Muaaz? जी सर. समझ में आया आपको? जी सर समझ. Which पता नहीं portion का पता. Sorry, what? लेकिन पता नहीं सर इनऑर्गेनिक का पोर्शन कब तक खत्म है. Inorganic का कब तक खत्म होगा? जी सर. मुझे शायद टीचर्स को नहीं पता है कि एग्जाम कंपार्टमेंट. मैंने बताया एग्जाम. आपको टीचर पढ़ा रहे थे, उनको नहीं पता था कंपार्टमेंट में आपको? एग्जाम का पूछ रहे थे लेकिन नहीं, शायद मुझे नहीं पता. एग्जाम का पूछ, कब एग्जाम है आपका? जी सर बताया तो मैंने पूछा कौन करते हैं. हाँ की माजा क्या कह रहे थे? जी सर. व्हाट यू आर सेइंग? सर वो मैंने पूछा वो क्लासेस कब तक होंगे.
कह रहे थे कुछ 7-8 लेक्चर लगेंगे, 1.5-1.5 घंटे की। पता नहीं कब तक करूँगा। ओके। So when we are using value HLC, then you are going to get two products. एक में आपको ऑर्थो पे और दूसरे में पैरा पे लगेगा। ठीक है। So these are the two different cases. Right? Now एक चीज बस आप यहाँ पे ये लिखिए, इसको बोलते हैं नाइट्रोफेनॉल, इसको बोलते हैं पी नाइट्रोफेनॉल। Because this is an ortho position, nitrogen ortho, nitrogen, nitrogen para, p nitrogen. Now these two can be separated by इस बारे में two nitrogen होगा ना, this has intramolecular hydrogen bond, और जो p nitrogen होता है इसके पास होता है intermolecular hydrogen bond. Intramolecular means जैसे इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, स्कूल के अंदर ही कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन दो स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन, राइट? So when you have intramolecular hydrogen bonding, one molecule in on itself it is going to have hydrogen bond. Intermolecular का मतलब होगा one molecule of p-nitrogenol, another molecule of p-nitrogenol, they will be having hydrogen bond. When one molecule and another molecule are having some bond, then it will be difficult to separate them. If it will be difficult to separate them, that means we cannot boil it off. So because there will be difference in the boiling points, these two can be separated by steam distillation. Because there can be two questions which can be asked in this way. How can you separate nitrogenol and p-nitrogenol? So you will write using steam distillation, because nitrogenol has intermolecular hydrogen bonding, but p-nitrogenol has intermolecular hydrogen. There's a clear that you have to write. Okay? So see here. Okay. So nitrogenol has intramolecular, p-nitrogenol has intermolecular hydrogen bonding. That's why they can separate steam distillation. जब भी difference in boiling point आता है, एक चीज बॉइल हो जाएगी, उसका फिर आप उसको कूल कर दीजिए, पानी लगा दीजिए, और दूसरी चीज नीचे रह जाएगी जो देर से बॉइल होती है, भाई। अब एक और गाने चलिए, अभी लिखे रहते हैं, मतलब देखिए, मॉडर्न एमओपी ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ picric acid, modern method of preparation of picric acid. Here you have phenol. We are going to use concentrated H2SO4 from H2SO4. You will get ortho and parasulfonic acid, which is here SO3H and SO3H. Once you use concentrated HNO3 from HNO3, it's going to give you picric acid. OH, NO2, NO2, and NO2. Here, this is just a modern method of preparation for picric acid. अब उसके बाद एक पॉइंट आप लिखेंगे ये, electrophilic aromatic substitution of phenol is faster than benzene due to the carbocation form
in phenol is stabilized by plus M effect of OH group plus M effect of OH group. ठीक है, ये एक पॉइंट है राइट। अब मतलब these are the white type of question है ना, कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, और ऐसे क्यों होता है, इस तरह के सवाल है ना, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे here. These are the white type of question. एक अगला white type of सवाल आएगा, why phenol does not show Friedel-Crafts reaction, है ना, KLCl3 वाला है ना, Friedel-Crafts alkylation acylation, we have done this in the halogen halogen, क्यों नहीं शो करता है, प्लीज यहाँ पर कैसे देखेंगे, क्यों phenol don't show Friedel-Crafts है ना, FC Friedel-Crafts reaction, because the oxygen in phenol is from phenol bonds with Lewis acid used in Friedel-Crafts reaction, used in Friedel-Crafts reaction. ठीक है, तो इतना ही है फिनॉल से ज्यादा नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल में इतना ही है, इसके बाद यह टू रिएक्शन, ठीक है, तो देखिएगा ऑलवेज रिएक्शन, ऑलवेज रिएक्शन क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव फिनॉल, you react this with NaOH, है ना, react this with NaOH, give me a second. Now when you react to NaOH, the OH will go away and ONA आ जाएगा यहाँ पे, because it is base, तो हाइड्रोजन निकलेगा, you will get ONA, salt, sodium phenoxide. You react for this with CO2, and you are going to have also 400 Kelvin temperature. एक काम करते हैं, आप आप क्लिक कीजिए, that will be enough. This will give you OH, and this C double bond O को ऐसे लिख देना, CO, CO2 है ना, ऑर्थोगोनल पे CO, and because everything is in basic medium, यहाँ पे Na आ जाएगा, ये OH नहीं रहेगा, ये भी Na रहेगा यहाँ. After that, we will add dilute HCl, and it is going to be OH here and COOH here. पर आराम से देखिए, आराम से देखिए, बताइए जी सर। इस मास, अब उसी तरह से कितना ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है रीमल्टीबल रिएक्शन,
तो बाय द वे अगर आप ऑलवेज रिएक्शन पूछे ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले में आपको डालना है NaOH, उसके बाद डालना है आपको CO2, उसके बाद डालना है आपको H+। ठीक है, एंड डायरेक्टली यू कैन राइट। देखिए ऐसे अगर लिखें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। NaOH का कोई काम नहीं, ये OH को ऐसे रखना है आपको, COOH। ठीक है, आपको COOH। क्या ख्याल है? जी सर। COOH लिखा आपको, रिएजेंट में NaOH से कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक। ठीक है। अगला रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन में भी तीन चीजें हैं। OH, and here you have to add first position में NaOH, and then you have to add CHCl3, second में H+। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या याद है, यू विल गेट ये OH एज इट इज। ठीक है, CHO, यू विल गेट CHO। ठीक है, CH दिख रहा है वो लगा देना बस यहाँ पे आप। अच्छा, इसका नाम भी लिखना होगा आपको, सैलिसिल्डिहाइड। ये सैलिसिलिक एसिड। इसको भी देख लीजिए आराम से। सर CH और CHCl से है। सॉरी, CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म होते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देखिए, देखिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, NaOH बेस डाला आपने, H निकल जाएगा, O Na आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अब क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन आटम दैट विल बी हाईली डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज उसको क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है। So chlorine is going to pull the electron density. Now it is going to pull the electron density. What's going to happen? This carbon will get a positive charge. Benzene attack करेगा and you will get something like this. ठीक है, you will get a carbon, एक हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे और दो क्लोरीन बचेंगे। See, if you see this carbon atom, it is going to have one hydrogen, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और CHCl3 का एक क्लोरीन निकल जाएगा HCl के फॉर्म में। Now what will happen? We still have NaOH in our solution. Both of these chlorine atom can be replaced by OH. अब अगर आपके पास RCl हो plus NaOH हो तो क्या हो जाएगा, आरओएच अल्कोहल बनता है। You have seen this. This ONA will be as it is. This carbon will get one hydrogen and then two OH. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, if one carbon atom has two OH तो पानी निकल जाता है like this, because what is very stable, जैसे इसको मौका मिलता है ये वाटर बन रहा है तो वाटर निकल जाता है and you will get CH। इसके साथ यहाँ तो यहाँ पे आपके पास C एक H ऐसे ही है और डबल बॉन्ड, तो वही हमने CHO लिखा है। देखिए आराम से,
मास। जी सर, समझ। हाँ मास। ठीक है, जी समझ गया। बढ़ सकते हैं आगे। जी सर। आगे आपके पास है ईथर्स। तो ईथर्स में आपके पास देखिए सबसे पहले ईथर होता कैसा है, आर ओ आर। ठीक है, आर ओ आर, इस तरह के कंपाउंड क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। नाम जनरली फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CH3O CH3, कॉमन नेम बहुत आसान है, कॉमन नेम पहले सीख लीजिए, दिस इज मिथाइल, दिस इज आल्सो मिथाइल, तो मिथाइल आपके पास बताइए मिथाइल, तो कंपाउंड कौन सा है, ईथर है। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए इसमें टू कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एंड देन अगेन वन कार्बन एटम, so this is ethyl, this is methyl, ether, ethyl, methyl, पर्सन बारह, जी सर। हमास पर्सन बारह। वैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो इथाइल होते हैं, ये भी इथाइल ये भी इथाइल, तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। अच्छा एक बात बताइए, और नॉमेनक्लेचर के लेक्चर्स आपने देखे क्या, जी सर, देंगे। कितना लेक्चर देखे, सर सारे हाँ देंगे। मिली, अरे देख लिया आपने, मतलब पेन और पेपर लेके या फिर ऐसे से देख लिया वीडियो की तरह, नहीं सर, पूरे नोट्स बना, सिर्फ लास्ट नोट बनाए। अब हो सब्स्टिट्यूएंट रहे में हैं थोड़ा, सवाल, हाँ सब्स्टिट्यूएंट में थोड़ा समझ सब्स्टिट्यूट नहीं में, आया, लेकिन बाकी सारे समझ अच्छा में। वो वाला नहीं समझ में आया होगा ना, सेकेंडरी टर्शरी वाला, सेक ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल, जी सर, वही वाला था। जी। वही वाला पार्ट था, ठीक है, उसको एक बार दोबारा दिए कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, ओके। तो नॉर्मल चीजें तो जनरली आपको मुझे तो ठीक रहेगा, हो जाएगा वहां से देखिएगा तो, ठीक है। उसमें कॉमन नेम्स हमने नहीं लिया है, लेकिन आपका क्या बोलते हैं, जो आई पैक नॉर्मल नेचर वाला पार्ट है, वो सब कुछ हमने लिया हुआ है उसमें, जी। ठीक है। उसके लिए से पहले यहाँ पे आपके पास जो ईथर है ना, इसमें यहाँ भी टू थिंग्स, एक है सबसे पहले आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और दूसरा है आपके पास प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत आसान है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो आपको सीखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, तो बेसिकली सबसे पहला वाला इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो इफ यू हैव आरओएच, ठीक है, और आपने H2SO4 डाला एट 443 केल्विन, 413 केल्विन, ठीक, तो यू विल गेट आरओआर, सिंपल आंसर। दो कार्बन एटम का अल्कोहल, सेम रीजन, ऑक्सीजन के इधर भी दो कार्बन उधर भी दो कार्बन, ठीक है, एक दो कार्बन यस। ऑक्सीजन तो इधर भी दो कार्बन, ठीक है। अगर आपके पास एक कार्बन वाला अल्कोहल हो, CH3OH, सेम रिएजेंट, ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन CH3 और इधर भी एक कार्बन CH3, समझ में आ रही है। यस सर। ये एक हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विल ऑलवेज गेट व्हाट, आर। अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स आप समझ सकते हैं खुद से, ऑलवेज फॉर्म सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर,
बिकॉज ये नहीं वैसा। और अगर हमको बनाना है फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर्स, फॉर unsymmetrical ether, we need two different alcohol that gives alcohol that gives mixture of product. डिफरेंट अल्कोहल्स, तो उससे जैसे आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। अब देखिए कुछ कुछ चीजें ना आपको ध्यान लग रही होगी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिवन वाले सवाल में कुछ चीजें या तो रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, या तो ज्यादा स्टेबल इस वजह से हो रहा है, या फिर अगर ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं कि उसमें मिक्सचर बन जाता है। कॉमन चीज आ रही है हमारे पास, जी सर। जैसे हम लोगों ने मतलब नंबर ऑफ कार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द बीटा कार्बन 2 बार हम लोग कर चुके हैं जोड़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You will see there is a kind of repetition in the concepts that we use in organic chemistry. So maybe the reactions are a lot, but concepts का repetition होता है ना, तो देखिएगा सब चीज को वैसी का वैसी रखना है, उस पर बस एक चीज चेंज करना है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज करना है। So these basic concepts are going to help you a lot in organic chemistry। अगर आप इस चीज को ध्यान देते रहे, पढ़ते वक्त ध्यान देना है आप, है ना। तो जब इसको हम कहाँ से रिलेट कर सकते हैं, इस तरह की चीज हमने कहाँ देखी थी, ठीक है। अब देखिए जरा, ये तो एक आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो मान लीजिए आपके पास किस तरह से अजीब मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, OH, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना, जैसे यहाँ पे H+ है और 413 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, OH, और ऑक्सीजन की इधर की वही चीज और ऑक्सीजन के उधर की वही चीज। बात सुन रही है आवाज? सर कैसे कैन सॉरी, कि वही है ना, देखो इसको यहाँ से जोड़ने की कोशिश करो, R OH क्या मिलता है, R समझो जरा। ये सीन एक्सप्रेस क्या पूछ रहे, क्या पूछना, साफ साफ पूछा मेरे पास, बहुत जल्दी आप बोल रहे समझ नहीं आती बात। जी जी समझ गया हाँ बताएं, सर। समझ जी गए सर, ना। हाइड्रोजन चला गया, हाँ फिर एज इट इज। हाँ, ये हाँ हाइड्रोजन चला गया, ये R ग्रुप दोबारा सा है जी ना। सर। ऑप्शन इधर और उधर दोनों तरफ ठीक ही है, ठीक है। जी सर। दूसरा जो है इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल दिया जाएगा आपको, इसमें आपको सोडियम डालना पड़ेगा और एल्कोक्साइड बनाना पड़ेगा, RON। अब इसके बाद RONA लीजिएगा प्लस alkane, I'm writing R dash so that both the R groups are not same, they are different, ठीक है। सोडियम, ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम को छोड़ दीजिए, यहाँ पे सोडियम हमने यूज कर लिया है, सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे RO R dash, देखिए जरा क्या हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जरा समझिए क्या हो रहा है। Na चला गया सर। सही है, और उसकी जगह क्या आ गया, उसकी जगह आर डैश। R dash कहाँ से आ रहा है देख रहे हैं, सेकंड वाले से। R dash देखिए, हाँ अल्काइल हाइड्राइड से आता है ना।
और जी उसके ऊपर देखिएगा ना, तो ये वाला आर जो है ना, दिस आर इज कमिंग फ्रॉम अल्कोहल। ओरिजिनली दिक्कत थी कि अल्कोहल को फिर हमने चेंज किया था ना, और ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम। सही है, जी सर, बात समझ आ रही है। समझ गया। ठीक है, तो सवाल हम लोग करते हैं। हाँ, कर रहे हैं हम लोग। पहले स्टेप में एनिक, सेकंड स्टेप में CH3 लिया। ठीक है, तो ईथर बनाना है आपको। एक आ रहा आएगा अल्कोहल से और दूसरा कहाँ से आएगा? अल्काइलाइड से। अल्कोहल में देख लीजिए कितना है, दो है, तो कार्बन कर दिया आपने, और एक ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, और ये अगला वाला कहाँ से आएगा? CH3 से आएगा। White is hanging, so just give me a second. ओके, मान लीजिए आपके पास वो एन है। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली टेकन हुआ है। सेकंड स्टेप में आपके पास है CH3Cl, एवरीथिंग एज इट इज विद द ऑक्सीजन एटम। सही है, और फिर दूसरा क्या आ जाएगा? CH3। मैंने बात देखिए जरा। हम्म, समझते हैं कुछ चीज जरा, क्या क्या हो रहा है। Na की जगह CH3 है ना? जी भाई आपके पास, है ना, मतलब ऊपर वाले में देखिए अल्कोहल था, अल्कोहल में बहुत समझ लीजिए उसको, है ना, कहाँ पे चेंज हो सकती है चीजें इस तरह से, है ना? जैसे हमने चेंज किया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। देखिए अच्छे अच्छे समझ लीजिए, हो गया? ठीक है सब कुछ। जी सर, मान लीजिए आपके पास, देखिए इसको, देखिए समझ में आ रही बात। सर Na तो रिमूव हम्म, हुआ, लेकिन आई आई छोड़ो ना, Cl का है, उससे पहले वाले में Cl का है, बताओ। आई छोड़ो ना, मतलब ये प्रोडक्ट कैसे बनना है कि नहीं? जो ऑप्शन के बाद जो Na के हटने के बाद जो चीज लग रही है वो कहाँ से आ रही है, दिख रहा है आपको? जी सर, समझ गया।
है ना, 2 कार्बन एटम है ना, ठीक है ना। जी। ये 2 कार्बन आइटम। बाकी सब में आपके पास ना Na है। हाँ, 2 कार्बन एटम, ठीक। बाकी सब में आपको NaX मिलेगा साथ में, ठीक है ना, सोडियम हाइड्राइड। अब इसमें एक चीज जो आती है ना, दैट इज, इसको या तो ऐसे बनाया जा सकता है, देखिए जरा। ठीक है, या तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है, ये ऑक्सीजन आटम जो है ये ऐसे है, प्लस RaX, देखिए। या फिर ये जो आपके पास है ना, RH प्लस, ऐसा कुछ, देखिए जरा, ये दोनों ही केसेस में सेम चीज बनेगा। ROH नहीं लेके हम RONA ले लेते हैं, एक ही बात। ठीक है जरा, हाँ। हम्म। भाई दोनों सेम है। हाँ, दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेगा ना, देखिए जरा, दोनों सेम नहीं है लेकिन, देखिए उधर वाले में ऑक्सीजन बेंजीन के पास है, इधर R के पास ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों से प्रोडक्ट सेम मिलना चाहिए, है ना, मेरी जी। बात। ठीक है। अब इसमें लेकिन हम ठीक लोग है। यूज क्या करेंगे, समझिएगा जरा। देखो, इन ऑल द केसेस वी हैव सीन दैट ये R निकल के भाग रहा है ना, सिद्ध हो रहा है ना, RX बॉन्ड, दिस बॉन्ड शुड बी ब्रोकन, तभी तो ये बनेगा। और यहाँ पे दिस बॉन्ड शुड बी ब्रोकन, तभी तो वो बनेगा, देखिए जरा। हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा ना, जैसे आयोडीन को हटना पड़ा था, पिछले वाले देखा था, तो आयोडीन हट रहा था, समझिए जरा। हाइड्रोजन जब तक टूटेगा नहीं, जब हाइड्रोजन टूटेगा तभी तो आर जाके फिर, या फिर बेंजीन जाके वहां पे अटैच हो जाएगा, Na को हटा के। इन केस ऑफ Na वी नीड बेंजीन, तो बेंजीन और X का बॉन्ड टूटना पड़ेगा, या फिर R और X का बॉन्ड टूटना पड़ेगा, बस तुम्हारी जिससे समझिए। है ना। अब इसमें जी। अगर देखें प्लीज, दिस कैन नॉट बी ब्रोकन इजी, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर, दिस मेथड इज द करेक्ट टू मेक ये अल्कोक्सी बेंजीन, मेक अल्कोक्सी बेंजीन। ये मेथड सही नहीं है, बिकॉज अगर उस मेथड को यूज करेंगे देन वी आर गोइंग टू हैव अ रिएक्टेंट इन व्हिच द RX bond cannot be broken, या फिर बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, बिकॉज देयर विल बी अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ओके, ठीक है। कैन आई गो फॉरवर्ड क्लास।
जी सर। मास आर यू देयर? यस सर। आगे बढ़े। आपको यहाँ पे आपके पास एक ज्यादा पूरी दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसको आपको पढ़ना है ना, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट आपको रिएक्शन में बस देख के नहीं पढ़ना है, रिएक्शन विद पेप्टाइड। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। आर ओ आर डैश में भी आर ही रखते हैं, प्लस एच आई। क्या होगा ना यहाँ पे देखिए, फिर वापस से रिएक्शन बन जाएंगे आर ओ एच। देखिए जरा क्या होगा। अब समझ आ रही है, देखिए जरा। जब आपके पास दोनों तरफ सेम चीजें हो ना, एक एल्कोहल बन जाएगा उतनी कार्बन का और दूसरा उतनी कार्बन का आयोडाइड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम बता दें, दो कार्बन आइटम इधर, दो कार्बन आइटम इधर, द प्रेजेंस ऑफ एच आई। तो आपको दो कार्बन का अल्कोहल प्लस दो कार्बन का आयोडीन। देखिए जरा। समझ गया। समझ रहे हैं ना? ठीक है, एक मिनट। जी सर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, दिस इज फॉर सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर मान लीजिए आपके पास हो जाए सी एस थ्री ओ एच और सी एस थ्री आई। ठीक है, अब देखना अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर में सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक फॉर 3 डिग्री अल्फा कार्बन। चेक फॉर, ठीक है। इफ द आंसर इज यस, इफ देर इज एनी 3 डिग्री अल्फा कार्बन, देन क्या करना है, अटैच अटैच एक्स, मतलब हाइड्रोजन। जैसे आयोडीन की जगह बी आर सी एल कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? क्या करना होगा आपको, यहाँ यस पे देखिए जरा। अटैच एक्स ऑन दैट अल्फा कार्बन। ठीक है, देखिए जरा। अटैच एक्स ऑन दैट अल्फा कार्बन। ठीक। या फिर अगर आपके पास नहीं है, इफ देर इज नो 3 डिग्री अल्फा, सॉरी, इफ देर इज नो 3 डिग्री अल्फा कार्बन, अगर यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन 3 डिग्री है ही नहीं, तो फिर क्या करना होगा आपको, अटैच द हाइड्रोजन ऑन स्मॉलर फ्रैगमेंट। आप मतलब समझ जाइएगा, ठीक है ना? इसको आराम से एक बार पढ़िए जरा, क्या है। 3 डिग्री देखना है, अगर 3 डिग्री है कहीं पे भी, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी। अब ऑक्सीजन एटम में जो भी कार्बन लगाओ दैट विल बी अल्फा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा। इफ आई लुक एट दिस अल्फा इज ओनली कनेक्टेड विद वन कार्बन, तो ये 1 डिग्री है। ठीक है, और ये अल्फा कार्बन देखेंगे तो दिस इज 3 डिग्री। कैन यू सी दैट? देखिए जरा, 3 डिग्री 1 डिग्री समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है ना? अब इसमें क्या करना होगा आपको, देखिए, ये फ्रैगमेंट को तोड़िए। ठीक है, और ऑक्सीजन की जगह क्या लिख देना है आपको, हाइड्रोजन, जो कि बी आर है, प्लस बाकी बचा हुआ अल्कोहल बन जाएगा। थोड़ा समझिएगा इसको आराम से।
यस सर, क्योंकि 3 डिग्री है तो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन 3 डिग्री पे अल्फा घूमेगा। कार्बन पे लगेगा। हाँ, अल्फा 3 डिग्री पे घूमेगा। हाँ, उस वाले पे जहाँ पे 3 डिग्री वाले पे लगेगा ना, ऑन दैट अल्फा कार्बन, उस इस पे जहाँ पे 3 डिग्री है। और बाकी वजह से अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। ये हम्म, मान लीजिए आपके पास एक दो तीन कार्बन आटम ऑक्सीजन, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इधर वाले से अल्कोहल हो जाएगा, है ना। और इधर 3 डिग्री वाले से हम्म, यहाँ पे मान लीजिए एच आई है, आयोडीन हो जाएगा। आयरन जाएगा। सही है। जी सही। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कुछ और है, जैसे 3 डिग्री है ही नहीं, 2 डिग्री, और यहाँ पे दो कार्बन। छोटा कौन सा, राइट या लेफ्ट? जी सर। छोटा छोटा कौन सा, राइट या लेफ्ट? हाँ, राइट। मतलब अल्काइल ग्रुप से ना, गैर। हाँ, राइट बोला। तो देखिए वही लिखा है हमने, अटैच हैलोजन ऑन स्मॉलर फ्रैगमेंट। नो 3 डिग्री, 3 डिग्री नहीं है ना कहीं पे, देख लिया आपने। ठीक है। ये नहीं देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पे आराम से, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। ठीक है। तो आपको इसमें तो अल्कोहल हो जाएगा, और उधर वाले के लिए, छोटे वाले के लिए हैलोजन। एज इट इज लिखिए, OH कर दिया आपने प्लस, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन HI है। आयरन जाएगा। हाँ, हाँ, सही है। और सिंगारी। यस। जी समझ आया। ठीक है। तो बस यही है। अब इसमें और कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग कल करके देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, और आप कल आप सुबह हम लोगों ने किस टाइम लिया था क्लास आपको? 9 o'clock। क्लास 9 o'clock, आपके जी क्लॉक से मतलब आपके टाइम से? जी सर, हम इंडिया के 11:30। 11:30। ओके। 11:30। ठीक है। थोड़ा और लेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दोपहर वगैरह में ले सकते हैं। सर इंडिया की दोपहर में। नहीं, हाँ, इंडिया का दोपहर में, इंडिया का आप चलेगा सर। ये 12-12 बजे चलेगा। चलेगा।